Assalamualaikum guys, I hope you guys are doing well today. आज हम present perfect tense की बात करते हैं. ठीक है. Present perfect tense जैसे कि मैं usually structure से start करता हूँ. Subject plus V3 और इससे पहले has और have. ठीक है. और उसके बाद ये V3 आ जाएगा. फिर after that we have object. This is the structure for affirmative sentences. That is what we call positive sentences, right? So if you want to make negative sentences, you simply need to put not after the have and have. So have is used for plural. And has is used for singular, right? So for example, he has gone to the market. So this is a positive sentence, right? So if I use, for example, negative sentence, so he has not gone to the market. Okay. So if you want to talk about the negative sentences, so negative sentences, what we do, we have to bring, interrogative sentences. So for interrogative sentences, we have to use this has and have in the beginning of the sentences, and then followed by subject, and then V3 accordingly, and then we have object at the end. So now let's talk about the uses. So it is used for an action started in the past and continued to the present. एक काम शुरू हुआ था पास्ट में और वो प्रेजेंट तक जारी रहा. ठीक है. सेकंड इसका जो यूज़ है, लिख नहीं सकता, जगह थोड़ी है, तो सेकंड इसका जो यूज़ है वो है जब आपको टाइम का नहीं पता होता. आई हैव रिटन अ बुक. ठीक है. मैंने किताब लिखी है. तो आपने लिखी है किताब, ये नहीं पता, टाइम रेफरेंस का नहीं पता. सो इफ़ यू डोंट वांट टू टेल द टाइम, अगर आप टाइम बताना नहीं चाह रहे हैं या आपको टाइम का नहीं पता, तो आप फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करें. ठीक है. आई हैव लिव्ड हेयर, मैं यहाँ पे रह चुका हूँ. इसका मतलब है कि आई स्टार्टेड लिविंग हेयर इन द पास्ट एंड आई एम स्टिल लिविंग हेयर. ऑन द अदर हैंड, अगर आप पास्ट सिंपल टेंस को यहाँ पे यूज़ करें, आई लिव्ड हेयर, तो इसका मतलब है कि आप पहले रहते थे, अभी नहीं रह रहे. ठीक है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. और इसके अलावा ये एक काम आप करते हैं एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में. आई हैव विजिटेड द मार्केट ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस दिस वीक. इस वीक में आप 2 दफ़ा मार्केट जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब और भी चांसेस है कि आप और भी इसके बाद भी जाएं. ठीक है. एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन है आपका है 1 वीक. इस वीक के अंदर आप 2 दफ़ा जा चुके हैं और अभी भी जाने का इम्कान है. सो दीज आर द few uses of the present perfect tense. So make sure you use them correctly, क्योंकि sometimes ये होता है कि हम लोग मिक्स करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल टेंस के साथ, राइट. हम इसको मिस यूज़ करते हैं, तो गलत यूज़ ना किया करो. पास्ट सिंपल का वो जो
کام ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کا پریزنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ جو ٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، اس کا تعلق پریزنٹ مومنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جب آپ ٹائم ریفرنس نہیں بتانا چاہتے، یا آپ کو پتہ نہیں ہے یا امپورٹنٹ نہیں ہے، ویئر دا ٹائم از ناٹ امپورٹنٹ، تو اس کیس میں یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، اور کمنٹ میں لکھیں کہ کون سی آپ کو ایمبیگویٹیز ہے، کیا شک و شبہات ہیں. آپ پلیز لکھ لیں تاکہ میں اس طرح ان ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بھی بنا لوں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.